Okay, guys, very good evening to all of you. I hope all of you remember that I posted in the Telegram group also that we'll be doing the derivations in capacitors today. क्योंकि capacitors में हमें resistors we're able to understand, capacitors we're not able to understand with that clarity, and then we find it difficult to do questions on capacitors. So as all of you had suggested, I'll be doing all the important derivations in all the important chapters, and that is what the task is up to. So, मतलब मान लो कि 5 to 6 marks तक capacitor से आएगा ही आएगा. And if I look at the derivations, the derivations are pretty small, but very important for us to understand. And why very important for us to understand? Because it plays an important role in our ability to solve questions. So let us start with the derivations in capacitors. Okay. Now, before we move on to capacitors, I want to discuss a concept which is about electric field. So guys, let's assume that you have a constant uniform electric field which is like this. So let me take this electric field to be equal to E naught and direct it to the right. Now, if I have a positive charge kept here at point A, what will happen to it? Will it move towards the right or to the left? The answer is based on the concept of force. Ki bhaiya, force, if the charge is kept in an electric field, it will experience a force. And if it's a positive charge, it will experience a force in the direction of field. So this is the direction in which it experiences a force. So it automatically moves in this direction. And let's say it reaches a point B here. The separation between point A and point B is, let's say, some delta R. Right? Now, can I somehow relate the potential difference between the point A and B? Can I find a relation between A and VA minus VB? Can I find a relation here? Or VB minus VA for that matter? So to understand that, हमने एक formula पढ़ा है कि electric field in a region is defined as minus del V by del R. हम सब ने पढ़ा है. बड़ा गंदा फॉर्मूला है, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोर्स में है और बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बच्चों, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB. तो लेट से डेल V को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस E डॉट dr. ये हमारा फॉर्मूला था जिससे हम E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल आर है. अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं और मेरा इंटीग्रेशन है A टू B, राइट, और dr की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से डेल्टा R. सो डेल V का इंटीग्रेशन आएगा V, और उसमें जब मैं रखूंगा वैल्यूज तो आएगा VB माइनस VA is equal to minus E dot dr. You can see that the electric field vector and the dr vector would be in the same direction. So can I say it is equal to minus E into delta R? So can I say VA minus VB is equal to E delta R? ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन समझना निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर potential. Charge always moves from higher to lower potential.
So it clearly means that VA has to be greater than VB, because if I leave the charge at A, it will move towards B and not in the other direction. So it means VA is higher than VB. So VA minus VB has to be a positive value, and it is equal to E into delta R. ये relationship हमें बहुत importantly use करना पड़ेगा when we are talking about capacitors. Right. I hope all of you are noting it down simultaneously. Don't take screenshot. Screenshot से काम नहीं चलेगा. Boss एग्जाम में अब less than a month है, और less than a month अगर है तो अगर लिखोगे नहीं तो एग्जाम वाले दिन भी नहीं लिख पाओगे. स्क्रीनशॉट वहां पे चलेगा नहीं. So इसलिए अब थकना पड़ेगा. You'll have to learn to write for 3 hours. You'll have to ensure that you don't get tired, and please ensure that when you're studying, बच्चों एक टाइम बड़ा क्लियर होना चाहिए. अपना बोर्ड एग्जाम होता है 10:30 to 1:30 p.m. 10:30 a.m. to 1:30 p.m. and we have to ensure that our body clock is set to be most effective during this time. Most effective. When I say the body clock has to be most effective, what I mean is that please ensure that you're writing during this time at home these days. So that will make your habit of writing faster during this time, and you will be actually doing very well in your examinations. So writing at home during this time is very important. No mobile, no TV, no tablet, है ना. सर दर्द की गोली भी नहीं खानी है, वो वाली टैबलेट की भी बात कर रहा हूँ. So ensure that you're studying during these 3 hours, and when I say studying, you're writing. अगर आप ये कर लोगे आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगी. इसलिए फिजिक्स की जितने भी डेरिवेशंस हैं वो इस टाइम पे करो, लिखो. एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. आई विल हेल्प यू आउट विद इट. मैंने तुम लोग से लिस्ट ऑफ डेरिवेशंस मांगी कि भाई कौन से डेरिवेशंस हैं जो मैं तुम्हें करा दूं प्रैक्टिस. तुम लोग बता ही नहीं रहे. So how do I do? What do I do? Anyways, चलो हम आगे बढ़ते हैं. अब हम नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे. Capacitance of a parallel plate capacitor. So if I have to find the capacitance of a parallel plate capacitor, how do I find it? So let's first look at it कि भाई कैपेसिटर होता क्या है. तो कैपेसिटर, अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा हूं तो a parallel plate capacitor consists of two metallic plates parallel to each other, and these get connected to a battery. Now, how does a capacitor get charged? So when you connect it to a battery of, let's say, EMFE, what happens is that positive charge starts flowing in this direction. That is how current flows. ये positive charge यहाँ पे आता है इस plate पे. Now, due to induction, on the other plate, what happens is that minus Q charge is induced on the left hand side. And since this plate was neutral, this right plate was neutral, तो इधर plus Q charge आ गया. Now this plus Q charge is attracted by the negative terminal of the battery, and hence you can see that there is no flow of charge here, no flow of charge here, but still plus Q charge from the battery that's going out is coming back. So अपना circuit complete हो रहा है और ये process होता रहेगा. It continues like this till the capacitor gets fully charged. अब full charge का मतलब क्या है? Fully charged. When I say that the capacitor gets fully charged, what I mean is that if this plate is at potential difference V1 and this is at V2, then V1 minus V2 should become equal to E. And in that case, the charge that is stored on the capacitor is equal to its capacitance C into E. And this is how we get it.
Now, how do I get the capacitance of this capacitor, which comes out to be epsilon naught A by D? How do I get that value? This is our question, and this is what I want to discuss under this heading. तो पहले मैंने आपको समझाया कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, कैसे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट तक चार्ज आता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इट स्टेज देयर, इट डज नॉट मूव टू द नेगेटिव प्लेट. So between the positive and negative plate, there is no flow of charge, right? But this plus Q charge flows to the negative terminal, and hence it is not retained there. What is retained is plus Q charge on the left plate and minus Q charge on the right plate. तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे. सॉरी, सो अब हम इमेजिन करते हैं कि जो कैपेसिटर है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी दो प्लेट्स हैं. दिस इज वन ऑफ द प्लेट्स and this is the other plate. Now the area of cross section of each plate is A and the separation is small d. Now I have to establish a constant or uniform electric field in this. So if A is equal to the length into breadth, then both length and breadth are very, very large compared to small d, so that these two plates behave as infinitely large plates to be compared when they're compared with small d. So infinitely large अगर इन plates को लगना है compared to small d, तो इनकी lengths और breadth, इनकी length और breadth बहुत बड़ी होनी चाहिए compared to small d, right? अब अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब भी हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी विच इज लेट्स से ई नॉट. ठीक है ना? और ये ई नॉट जो होगी, दिस विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट. दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा बीच में, पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू रिपेल इट, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव प्लेट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इट, सो नेगेटिव प्लेट विल आल्सो हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या है बच्चों? सिग्मा इज द चार्ज ऑन एनी ऑफ द प्लेट्स. पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, नेगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, and divided by the area. So can I say that the electric field in this region E naught is equal to sigma की जगह मैंने रख दिया Q by A epsilon naught. This is the electric field. Now due to this electric field there is a potential difference. Let's say the potential of the positive plate is V1 and the potential of the negative plate is V2. So V1 minus V2 is the potential difference, right? And if I have to write it in terms of the electric field, I can say अभी जैसे आपको बताया था V1 minus V2 will be equal to E naught into small d. क्योंकि ये अगर V1 से V2 तक मैं देखूं तो if I put a test charge, it will automatically move towards the other plate and the potential difference will come out to be V naught V1 minus V2 is equal to E naught into D, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिराइव करके दिखाया था. अब अगर हम देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे आप Q बाई V भी लिखते हैं. तो बेसिकली इसको काफी जगह पे V भी बोला जाता है, V2. So this becomes equal to Q upon V1 minus V2, which is equal to
E naught, that is Q by A epsilon naught into D. So from here you can see that what gets cancelled is Q and you get epsilon naught A by D. तो आपने प्रूव कर दिया कि the capacitance of a parallel plate capacitor is independent of Q and it is also independent of V. So capacitance is, can I say it is a geometrical property? So it is dependent on epsilon naught, which is a constant. A is the area of each plate and D is the separation. ये याद रखना है. Right. So this is how we've got the capacitance of a parallel plate capacitor derived. आपको सिर्फ हमेशा एक ही काम करना है. आपको जब भी कभी डेरिवेशन करना है कैपेसिटर में तो दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 minus V2 निकालना है and then you have to divide Q upon V1 minus V2 and this will help you get the capacitance. So अब मैं बात करूंगा अगर मैंने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया, अगर इसके बीच में मेटल रख दिया, कुछ भी रख दिया तो क्या होगा. Right, one by one we'll come to each of them. I hope this makes sense. Please note it down. Be comfortable, take a minute. I don't mind. जल्दी से कर लो बस. हो गया बच्चों? I'm assuming कि हो गया होगा. So next I move on to the capacitance of a capacitor completely filled with a dielectric of dielectric constant कैपिटल K. तो अब अगर मैं डायग्राम फिर से बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो देखिएगा मेरे साथ साथ आप स्केच भी कर सकते हैं डायग्राम. तो मेरे पास अगेन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. लाइक दिस. और इस कैपेसिटर के अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया. सो डाइलेक्ट्रिक विल बी लाइक अ ब्रिक. जैसे इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक ब्रिक रख दी हो आपने, विच इज लाइक अ क्यूबॉइड. आई होप आप सब समझ पा रहे हैं. मैं आपको पूरी तरह से ये क्लैरिटी दे रहा हूं कि दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक. सो ये ऐसे आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया. स्लैब है ये पूरा विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. अब मैं इसका जो डायग्राम बुक में दिखता है मैं वो वाला बना रहा हूं. सो बुक में हमें क्या दिखता है, ये प्लेट, ये दूसरी प्लेट और हमारे इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली कवरिंग द रीजन बिटवीन द प्लेट्स. सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है D हो जाएगी. अब बच्चों जैसे ही हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, वी ऑल नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन विल ड्रॉप फ्रॉम एन अर्लियर वैल्यू. पहले वाला जो कैपेसिटर था उसी की बात कर रहा हूँ. उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E थी तो अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E नॉट बाई K. और E नॉट हमारी कितनी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सो E नॉट बाई K कितनी हो जाएगी बच्चों, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा को कैपिटल Q बाई A लिख सकता हूँ बिकॉज सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी क्योंकि प्लेट पे चार्ज है, इस मैंने बताना भूल गया था पिछले केस में, बट
ये Q चार्ज इस पूरी पॉजिटिव प्लेट पे स्कैटर्ड है इस तरह से, और दूसरी प्लेट पे इतना ही नेगेटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, दूसरी प्लेट पे इतना ही नेगेटिव चार्ज है। सो इस पे चार्ज है -Q, उस पे चार्ज है +Q, ऐसी सिचुएशन है। सो ये हो गया हमारा Q बाय A, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A. So can I say this becomes Q by Ka epsilon naught. Now we know that if I have to find the potential difference between this plate and this plate, I can say V1 minus V2 is equal to, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जो है E इंटू डी, E की जगह क्या आ जाएगा, E नॉट बाई के, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट बाई के इंटू डी, विच इज इक्वल टू Q upon Ka epsilon naught small d. Now we know that the capacitance of such a capacitor is defined as Q, charge stored on the positive plate, divided by the potential difference, that is V1 minus V2. So ये हो गया Q divided by QD upon Ka epsilon naught. So this comes out to be K epsilon naught A by D. So inserting a dielectric is very, very helpful for me because it increases the capacitance by K times. And moreover, अगर ये dielectric slab नहीं डालता तो capacitor की दोनों plates because of having opposite charge might make the capacitor collapse. अब ये dielectric डाल दिया, dielectric is an insulator, है ना? So उसका K डिपेंड करेगा, K बताएगा कि उसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी कितना स्ट्रॉन्ग है. सो स्ट्रॉन्गर द इंसुलेशन, हायर द वैल्यू ऑफ K, एंड दैट इज वाई जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्ट्रॉन्ग होगा, यानी जितना वो इंसुलेटिंग होगा, उतनी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी. इसीलिए E in the medium, in the dielectric medium is inversely proportional to the K value. So अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फायदा हो गया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी बढ़ गई, यानी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज भी बढ़ गई. एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो प्लेट्स जो कोलैप्स हो सकती थी अब नहीं होंगी. So because of these benefits, I think it is very important to understand that this is how a capacitor can be made better. So normally capacitors available in the market have, for sure, definitely they have dielectric field between the plates in the form of mica. In most of the cases, laminated mica is used as the dielectric. ठीक है बच्चों, I hope while I was talking you had good enough time to note it down. Still take a couple of minutes to note down whatever you want to. So I've showed a relatively 3-dimensional figure and the 2-dimensional equivalent of it as well. अब अगर हम पार्शियली इसमें, अब इसके बाद मेटालिक स्लैब रखेंगे, मेटालिक स्लैब के बाद पार्शियली डाइलेक्ट्रिक और पार्शियली मेटालिक रखेंगे, तो आपके पास सारे केसेस में कैपेसिटेंस कवर हो जाएगी. ठीक है बच्चों, आई एम अस्यूमिंग कि आपने लिख लिया होगा. अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर completely filled with a metallic / conducting slab. So अब अगर मैंने मेटालिक या कंडक्टिंग स्लैब भर दिया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बच्चों ये रहा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये रही नेगेटिवली चार्ज प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और इसके बीच में आपने रख दिया एक एक मेटालिक स्लैब. सो दिस इज अ मेटालिक स्लैब, metallic slab. अब हम जानते हैं inside a metallic slab the electric field is 0, and actually if you look at it, the metallic slab, if it is placed in contact with the metallic plate, so everything looks like a single body. तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो के आ जाएगा और इधर से इधर आ जाएगा. सो ये चार्ज हो गया 0, ये भी चार्ज हो गया 0.
So can I say that the capacitance here cannot be defined because V1 or V2 का difference भी zero हो गया. We all know that as the electric field is zero, can I say V1 minus V2, which is equal to E into D, is equal to zero as E is equal to zero. Now capacitance C is equal to Q by V. Charge भी नहीं बचा और charge भी नहीं है और potential difference भी नहीं है, तो capacitance इसकी कैसी हो गई? Infinity मत बोलना बच्चों, क्या बोलोगे? It is not defined because any number divided by zero gives you a not defined value. So we cannot define the capacitance of such a capacitor. It cannot store charge because all the charge will move and flow to the other plate and would neutralize the negative charge there. So ideally इस केस में हम यही कहेंगे कि कैपेसिटेंस इसकी डिफाइन ही नहीं हो सकती क्योंकि ये कैपेसिटेंस रहा ही नहीं है. सिंपल, राइट? I hope you're able to understand. Please note it down. I hope it is going to help you. Questions के लिए तो बहुत important है ये. So if time permits, I'll also cover a lot of things about potential, but ये potential वाली जो बात मैंने शुरू में की है, ये तो बहुत important है ही. ओके, आगे बढ़ते हैं. हमें दो कैपेसिटर के केसेस और करने हैं और उसके बाद हमें एक केस करना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का और एक दो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सपोर्टिंग केसेस करने हैं. तो काफी कुछ करना है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर partially filled with a conducting slab. So अब अगर मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के बीच के स्पेस को मैंने पार्शियली फिल्ड किया है विद अ कंडक्टिंग स्लैब. पार्शियली फिल्ड कहीं पे भी, इट इज नॉट स्पेसिफिकली इन द सेंटर, कहीं पर भी हो सकता है. सो द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल d. The thickness is of this region is small t. Let's say this part is of length x1 and this part is of length x2. तो मैं बोल सकता हूं x1 plus x2 plus t is equal to d. अब बच्चों ये बीच वाला जो है दिस इज आवर मेटालिक स्लैब. सो मेटालिक स्लैब अगर मान लेते हैं इधर चार्ज प्लस क्यू है, इधर चार्ज माइनस क्यू है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हुई जो यहाँ पर कितनी है ई नॉट, यहाँ पर कितनी है ई नॉट और यहाँ पर कितनी है ई इक्वल टू 0 है. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इस तरफ भी है, इस तरफ भी है. सो लेट्स से इधर का पोटेंशियल V1 है, इधर का V2 है, इधर का V3 है, इधर का V4 है. सो अब मुझे क्या करना है? मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है विच इज इक्वल टू Q अपॉन V विच इज इक्वल टू V1 माइनस V2. तो अब मुझे क्या करना है इस केस में? I have to find what? I have to find V1 minus V2. Now V1 minus V2 cannot be found directly because the electric field is not constant. So first I'll find V1 minus V3. So V1 minus V3 is equal to E naught into x1 because the separation is x1. I hope all of you understand that.
Then I try to find V3 minus V4. V3 minus V4 is equal to 0 into T because there is no electric field in this region. So V3 is actually equal to V4. And then I find V4 minus V2, which is again equal to E naught multiplied with X2. Now, as I have to find V1 minus V2, मैं क्या करूँगा? मैं इन तीनों equations को add कर दूँगा. So I'll get V1 minus V2 is equal to E naught X1 plus X2. ठीक है ना? E naught को मैं लिख सकता हूँ again sigma by epsilon naught और X1 plus X2 को लिख सकता हूँ मैं D minus T. Because you can clearly see from here that X1 plus X2 is equal to D minus T. ठीक है जी. So मैं फिर से बता देता हूँ, ऊपर चलते हैं हम. V1 minus V3 कितना है बच्चों? E naught X1 है. V3 minus V4 कितना है? कितना है भाई? 0 है. और V4 minus V2, again the electric field from 4 to 2 वाली region is E naught like this. This electric field is E naught like this. बीच में electric field नहीं है. So now can I say this is equal to Q upon A sigma की जगह epsilon naught D minus T. And we all know that capacitance is equal to Q by the potential difference between the two plates. So Q by V1 minus V2, which is equal to Q by divided by Q by A epsilon naught into D minus T. So from here you can see Q gets cancelled and what you get is epsilon naught A upon D minus T. And this gives you the answer. So अगर मेरे को कैपेसिटेंस निकालनी है ऑफ अ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद अ कंडक्टिंग स्लैब, इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी. और आप यहां से भी निकाल सकते हो फॉर अ कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब. So in that case, T becomes equal to D and D minus T becomes 0 and the capacitance is not defined. So that's how we're going to do it, right? So I hope this derivation makes sense to you. Kindly note it down. Yeah, Vishnu, these are based on very important points that are needed for your preparation in capacitors. Okay, so now let me move on to the next important part, where if the capacitor has capacitance of a capacitor partially filled with a dielectric. बच्चों क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Again, I'm telling you. So partially filled with a dielectric of thickness T, where T is less than D. So now what is going to happen? ये कैपेसिटर और इसके बीच में हमने ले लिया थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? कैपिटल के. इधर है प्लस क्यू चार्ज, इधर है माइनस क्यू चार्ज. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? ई नॉट
upon K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया, where E naught is equal to sigma by epsilon naught, हम सबको पता है. So again, let me take the potential of this plate to be V1. Here it is to be V3. This is V4. This is V2. And I have to find V1 minus V2. So सबसे पहले मैंने निकाला V1 minus V3, which is equal to E naught E naught into, हम वही वाला part लेंगे. This is, let's say, X1. This is X2. And this is T. So V1 minus V3 will be equal to E naught X1. V3 minus V4 will be equal to E naught by K hai electric field, and the thickness of this region is T. And V4 minus V2 is equal to E naught X2. So this is how we're going to write the potential differences. On adding them, I get V1 minus V2 is equal to E naught X1 plus E naught by K into T plus E naught X2. So from here I can say V1 minus V2 is equal to E naught into X1 plus X2 plus E naught by K into T. All right. So V1 minus V2 is equal to E naught T minus T plus E naught by K into T. So can I say V1 minus V2 is equal to, सिर्फ mathematical steps हैं बच्चों, और कुछ नहीं है. E naught into D minus T plus T by K. So V1 minus V2 is equal to E naught की जगह आ गया sigma by epsilon naught, and sigma again can be written as Q by A epsilon naught. तो वही लिख देता हूँ, याद रखना यही वैल्यू हम लिखते हैं, Q by epsilon naught A T minus T plus T by K. And from here, if I have to find C, C is equal to Q upon V1 minus V2. So what I get is epsilon naught A upon T minus T plus T by K. So ये आ गई कैपेसिटेंस ऐसे कैपेसिटर की. ठीक है बच्चों, इससे गंदा केस नहीं हो सकता है, इसलिए प्लीज इसको आराम से इफेक्टिवली नोट करना, so that you're able to reproduce, you're able to do if such a thing is asked. हो गया? Next we look at the energy stored in a capacitor. So what form of energy is stored in a capacitor? It is called potential energy, because the charge inside is static, बीच में charge flow नहीं हो रहा है, तो this potential energy is electrostatic potential energy. So electrostatic potential energy is stored in a capacitor, and how is it stored? Let us look at that. So let's say that I have a capacitor that's slowly getting charged. So if it is getting charged, it is getting charged through a battery. So let me show a battery. And this capacitor is getting charged through a battery of
potential difference V naught. So how is the capacitor getting charged? The charge is flowing to this plate. Let's say इस plate पे charge flow होके कितना आ गया है, कुछ plus Q, and इधर कितना induced है, minus Q, and the capacitor is not fully charged. इस time पर इसकी plate जो है V1 और V2 potential पे है, and V1 minus V2, which is, let's say, being written as V is equal to Q by C, right? Finally, the charge has to reach a value capital Q, where capital Q is equal to C into V naught. तो अभी चार्ज कम है, चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है. Let's say the battery does a work to supply a charge dq to this capacitor further. Now, when this does a work dq, then we know that the energy stored du, or the change in energy due to this charge coming in, energy stored नहीं बोलना चाहिए, change in the energy stored du can be written as V dq. So V is Q by C dq. So the plates carried a charge small q, and a further charge dq is coming to the positive plate, due to which the change in energy in the region will be given by V, potential difference, into dq. So that becomes Q by C dq. So when I integrate this to get the total energy stored, can I say U is equal to integral of du, which is equal to integral of Q by C dq, Q by C dq. So what you get here is and you'll have to integrate with limit 0 to capital Q. So what you get here is Q square by 2C. This is the energy stored in the capacitor. It is written as half Q square by C. Let's write it better. So half Q square by C, ये हो गई एनर्जी, और फिर C को मैं लिख सकता हूँ Q by V, तो ये हो गई हाफ Q square to Q by V नॉट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा टोटल चार्ज स्टोर्ड ये हो जाएगा. तो यही फॉर्मूला आ गया, हाफ Q इंटू V नॉट, और Q को अगर मैं लिख दूं CV नॉट, तो फाइनली हाफ CV नॉट multiplied with V naught, that is half C V naught square. So ये सारे के सारे फॉर्मूले एनर्जी स्टोर्ड के याद रखने हैं, because they help you in one or the other case. Please remember that. Please remember that. ठीक है बच्चों. So these three cases can now be remembered. And I hope you understood the derivation. So please note it down carefully. And in case you're encountering any doubt, do ask me right now. ठीक है बच्चों, तो यहां तक मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, which is first capacitors in series and capacitors in parallel. So how do we first look at a series combination of capacitors? बच्चों, जब भी कैपेसिटर्स सीरीज में लगे होते हैं तो होता क्या है, लेट्स से दिस इज अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V naught, and I'm taking a combination of two capacitors. The first one has a capacitance C1 and the second one has a capacitance C2. अब बच्चों, अगर आप ऐसा कनेक्शन करते हो और लेट्स से इस प्लेट का पोटेंशियल है V1, तो फाइनली जब ये चार्ज हो जाएगा तो इस प्लेट का पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों सेम वायर से कनेक्टेड हैं, तो इसका भी पोटेंशियल V1 होगा. इसका पोटेंशियल V2 है तो इसका भी पोटेंशियल V2 होगा. अब
अगर इस प्लेट का पोटेंशियल कुछ V3 है तो इसका पोटेंशियल भी V3 होगा, बिकॉज दीज टू आर अगेन कनेक्टेड बाय द सेम वायर. So can I say V1 minus V3, V3 minus V2 can be found, and this will give me V1 minus V2 जो मुझे मिल जाएगा. अब पहले हम निकालते हैं V1 minus V3. So let's say when these capacitors are fully charged, this capacitor has a charge plus Q here, this plate will have minus Q. इधर जो माइनस क्यू वाली प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड पे होगा वो फ्लो होके यहाँ आ जाएगा, इधर इंड्यूस होगा माइनस क्यू और यहाँ से प्लस क्यू बैटरी में आ चुका होगा. सर्किट कंप्लीट. अब सबसे पहली चीज, कैन आई से दैट V1 minus V3 is equal to Q by C1. Similarly, V3 minus V2 is equal to Q by C2. बच्चों जब भी आप सीरीज में कैपेसिटर्स लगाओगे तो याद रखना दोनों कैपेसिटर्स पे जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उन सब पे चार्ज सेम होता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. they'll have same amount of charge. So Q1 Q2 नहीं होगा, Q ही होगा दोनों पे. और अब जब मैं यहां से V1 minus V2 निकालूंगा तो that will come out to be Q by C1 plus Q by C2 which is equal to Q कॉमन निकाल के 1 by C1 plus 1 by C2. Now, if I replace these two capacitors by a single capacitor of capacitance CEQ, then that capacitor can be considered to be equivalent to these two put together only if on connecting it with the same battery you get the same amount of charge on this as well. So let's say ये जो CEQ वाला मेरा कैपेसिटर है, CEQ, इसकी भी जो पॉजिटिव प्लेट है उस पे प्लस Q चार्ज ही आए और नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q चार्ज ही आए. अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, तो इसका पोटेंशियल जब V1 हो जाएगा तभी मैं बोलूंगा ये फुली चार्ज हुआ और इसका V2 हो जाएगा. तब तक जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट डू नॉट मैच. यानी कि पॉजिटिव प्लेट और जो टर्मिनल जिससे वो कनेक्टेड है उन दोनों का पोटेंशियल अगर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर पे भी फर्दर चार्ज आएगा. राइट. अब अगर यहां से मैं देखूं तो V1 minus V2 is equal to Q by C equivalent. And if I compare these two, you can clearly see Q gets cancelled and what you get is 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ठीक है बच्चों. सो ये हो गया हमारा कैपेसिटर्स इन सीरीज का derivation. I hope all of you understood why it happened, how it happened, and how do we do it. अब मैं इसके बाद बात करूंगा पैरेलल की, पर यहां तक लिख लो आप लोग पहले. ठीक है बच्चों. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज कैपेसिटर्स इन पैरेलल. अब बच्चों जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं इन अ सर्किट, which means let's say I have a capacitor of capacitance C1 and another capacitor of capacitance C2 connected in parallel, of course, to a battery of potential difference V0. So let's say V0 में इस टर्मिनल, V0 और इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V2, इसका है V1. तो ये पॉइंट हो गया V1 पोटेंशियल पे, ये पॉइंट भी हो गया V1 पोटेंशियल पे, ये पॉइंट हो गया V2 पोटेंशियल पे, ये पॉइंट हो गया V2 पोटेंशियल पे. राइट जी.
अब फर्स्ट कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा Q1, that will be equal to C1 into V1 minus V2, which is equal to V0. So it will be equal to C1 V0. Similarly, charge on the second capacitor would be C2 into V0. मैं सीधे लिख सकता हूँ. याद रखिएगा, पैरेलल में what is same is potential difference across each capacitor is same. तब हम बोलेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ठीक है जी. सो अब ये हो गया हमारा दो कैपेसिटर्स. अब अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को रिमूव करता हूं एंड आई पुट अ सिंगल कैपेसिटर which is equivalent to these two, it means that this single capacitor that you have, when connected to the same battery, let's say the capacitance is C equivalent, so it will be equivalent to them if it has the total charge on it is equal to the sum of charges of the individual capacitors. So अगर तीन capacitors होते और उनकी जगह एक single लगाता, तो total charge on this single capacitor should have been Q1 plus Q2 plus Q3. Then I would say that these three capacitors can be replaced by a single capacitor. So again, going by the same logic, this side will have a potential V1 finally, and this will have a V2, and then the charge on these two is Q1 plus Q2. So can I say now from here that क्या बोलूंगा? यही बोलूंगा भाई कि Q1 plus Q2 is equal to C equivalent into V1 minus V2, which means C equivalent into V0. अब Q1 की जगह लिख सकता हूं C1 V0, Q2 की जगह लिख सकता हूं C2 V0. कहां से आया? कहां से आया भाई? ऊपर से आया. ऊपर से मतलब इसी में ऊपर से, ठीक है ना? इज इक्वल टू C equivalent into V0. क्या कैंसिल हुआ? V0. So C1 plus C2 is equal to C equivalent. Derived and ready to go. So this is how you have derived the expression for capacitors in parallel as well. So series हो गया, parallel हो गया, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाला, थोड़ा डाला, पूरा डाला, मेटालिक स्लैब डाला, थोड़ा डाला, पूरा डाला, सारी कैपेसिटेंसेस निकाल दी, एनर्जी स्टोर निकाल दी. सो हमने इतनी सारी चीजें 1 घंटे में निकाल दी हैं. अब मैं कुछ और चीजें डिराइव करने जा रहा हूं यहाँ पे, जो कि इसके बाद करूंगा, बट पहले यहां तक आप नोट कर लीजिए. एक इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट आता है विच इज कॉमन पोटेंशियल. I'll say it should be written as common potential difference. Difference word जरूर आना चाहिए. What do we mean here? We mean that if I have one capacitor of capacitance C1 charged with a battery of potential difference V1. So V1 is the potential difference here, not the potential of one of the plates, but the potential difference across these two plates. In other words, I'll say इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 है. अब मैंने दूसरा कैपेसिटर लिया, ये रहा जी आपका दूसरा कैपेसिटर है. इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? खुद जी C2 है, और इसके प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V2. यानी V2 इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है. ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, ये ऊपर वाले की पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट. नाउ इफ आई कनेक्ट बोथ ऑफ देम, इफ दे कनेक्टेड, सो अभी मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक स्विच लगाया और ये स्विच ओपन है. ठीक है, यहां पर एक स्विच लगाया, ये ओपन है. अब मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों स्विचेस को क्लोज कर दिया. जब मैंने इन दोनों स्विचेस को क्लोज कर दिया,
तो कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर चार्ज फ्लो होगा. And till when will this charge flow happen? This charge flow will happen till both the capacitors attain the same potential difference. इसका मतलब चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों की पॉजिटिव प्लेट्स और दोनों की नेगेटिव प्लेट सेम पोटेंशियल पे ना हो जाए. लेट्स से उस केस में इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V हो गया. V. सो मुझे यही कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है. और मुझे गिवन क्या क्या है? मुझे गिवन है C1, V1, C2, V2. अब बच्चों सपोज करते हैं इनिशियली इस प्लेट पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2 एंड फाइनली इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पे चार्ज हो गया Q2 डैश. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए येलो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर्ड टू द ब्लू वाला कैपेसिटर, then charge will always flow from higher potential to the lower potential till both the plates that are positive and connected together attain the same potential. So charge flow हुआ, एक से चार्ज फ्लो होके दूसरे पे आया यानी चार्ज चेंज हुआ. सिमिलरली नेगेटिव प्लेट्स पे भी चार्ज चेंज हो जाएगा. इधर हो जाएगा -Q1 डैश, इधर हो जाएगा -Q2 डैश. अब आप पॉजिटिव प्लेट्स की बात कीजिए. सो अगर पहले दोनों पॉजिटिव प्लेट्स पे मिलके चार्ज Q1 प्लस Q2 था, अब Q1 dash plus Q2 dash हो गया. So Q1 dash plus Q2 dash has to be equal to Q1 plus Q2 because there is no other source or battery connected through which charge can be supplied. So total charge on the two positive plates put together will remain the same. Though the configuration has changed, the amount of charge on each of the plates has changed, but total charge on both the plates put together, that is both the positive plates is same, put together is constant. Similarly, negative plates पे भी जो नेगेटिव चार्ज था वो भी एक दूसरे में शेयर हुआ, कुछ इधर से उधर गया, बट फाइनली दोनों प्लेट्स ने इक्वल पोटेंशियल अटेन कर लिया. और उस टाइम पे जो दोनों प्लेट्स हैं उनका भी मिलके नेगेटिव चार्ज -Q1 डैश प्लस -Q2 डैश हो गया. सो दिस इज हाउ द चार्ज मस्ट हैव मूव्ड. अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं. Q1 को मैं लिख सकता हूँ C1 V1, Q2 को लिख सकता हूँ C2 V2, Q1 डैश को लिख सकता हूँ C1 V, Q2 डैश को लिख सकता हूँ C2 V. सो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V. तो V निकालना है तो वो कितना हो गया? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. This is the final common potential difference that both the capacitors attain finally. I hope that's a sensible thing, and I hope you would have understood what we've done. Very, very important. Take a couple of minutes to note it down. Assimilate, आराम से लिखना, समझ के लिखना. कुछ डाउट हो तो चैट बॉक्स में भेज देना, like our dear friend Vishnu Dev did. You can ask. Next, let me move on to the case where questions might come and we have to be extremely careful. That is the concept of energy density. तो हमने पढ़ा है कि if there is a constant electric field in a region, if there is a constant electric field, let's say the constant electric field is E, then the energy density which is equal to the potential energy per unit volume is given by 1/2 epsilon naught E square.
ये हो जाती है हमारी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, which is called energy density. So energy density is energy stored per unit volume. ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में. अब हम कैसे डिराइव करेंगे इसे भी. सो बच्चों, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ सेटअप होती है? नॉर्मली कैपेसिटर में होती है. सो लेट अस टेक द केस ऑफ अ कैपेसिटर. तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है. ठीक है भाई. इस कैपेसिटर में वी नो दैट देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड existing between the two plates. है ना. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने वॉल्यूम में है? So if you ask me the volume in which it is, can I say that it is equal to the volume of a cuboid that is generated by these two plates? So ये जो cuboid है, इसकी अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये सेपरेशन स्मॉल d है, so can I say that the volume will be equal to L B D? और बच्चों L इंटू बी को ही हम एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं. तो कैन आई से द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू ए इंटू डी. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? वी नो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर. अब देखो बच्चों, हाफ सी को मैं क्या लिख सकता हूं? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. ठीक है ना. और वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो कैन आई से वी इज इक्वल टू ई इंटू डी का स्क्वायर. सो व्हाट आई गेट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आया मेरे पास ए इंटू डी ई स्क्वायर. ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू. मैं इसे ठीक से लिख देता हूं. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ऐसे ही है, एक नीचे डी है और ऊपर डी स्क्वायर है, तो ऊपर एक डी बचेगा और ई स्क्वायर आएगा, ये आएगा. सो ई स्क्वायर डी. व्हाट इज दिस? दिस इज यू. So if I have to find the energy density, small u, can I say it is equal to capital U divided by the volume, which is equal to 1/2 epsilon naught A into D E square divided by the volume, that is A into D. So from here A into D gets cancelled, and what I get is 1/2 epsilon naught E square. Simple. So this is how you find the energy density. ये टर्म बहुत यूज होता है, बहुत लोगों ने पढ़ा होता है. डेरिवेशन करके आपको सुकून हो जाएगा कि why do we use this formula and how do we obtain this formula. ठीक है. आई होप कैपेसिटर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है. नहीं आ रहा है तो इसे जरूर एक बार फिर से देख लेना रिकॉर्डिंग में, टू सी द फ्लो. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? कुछ डाउट है अगर तो मैं अभी इस स्टेज पे पहले डाउट लेना चाहूंगा, फिर मुझे एक ही केस और करना है, एंड आफ्टर दैट आई थिंक वी आर ओवर फॉर द डे. सो कुछ डाउट है स्टेज पे तो अभी आप प्लीज चैट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, एंड माय कलीग इज गोइंग टू हेल्प मी विद दैट. सो please be quick in sending a doubt. If you don't have a doubt, you may send no doubt, because अगर आप कुछ भी मैसेज भेज देते हो तो क्लैरिटी होती है that I can move ahead. Any doubts? No doubts? Okay. So let me move to the next case. बच्चों यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ force exerted by
one capacitor plate on the other. So let's look at what is the force exerted by one capacitor plate on the other. So अगर हम देखें तो हमारे पास कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं. Let me show it to you here. Sorry, let me draw it a little neatly. So ये मेरी positively charged plate, ये मेरी negatively charged plate. अब देखो बच्चों, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू. इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, और दूसरी वाली नेगेटिव प्लेट की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इंटू जो भी है, सिग्मा क्यू बाय ए ही है, उसकी भी माइनस चार्ज नहीं देंगे. चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, साइन असाइन कर देंगे. नाउ यू नो कि अगर मैं इस नेगेटिव प्लेट पे चार्ज निकालूं, फोर्स निकालूं सॉरी, तो फोर्स उस पे अट्रैक्टिव होगा, and this force in magnitude will be equal to the charge on the negative plate multiplied with the electric field only due to the positive plate. So force on the negative plate here is shown by F minus. So F minus is the force on the negative plate, and E plus is the electric field only due to the positive plate. क्योंकि बच्चों अगर मैं नेगेटिव प्लेट पे फोर्स निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट की वजह से नहीं लूंगा, क्योंकि एक प्लेट अपनी वजह से अपने पे फोर्स नहीं लगा सकती है, वो दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करती है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है और एक ही साइड पे है विच इज द इनर साइड, यहां पर है ना बच्चों, और इधर नेगेटिव चार्ज है जो कि इनर साइड पे है. सो कैन आई से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जस्ट वन साइड चार्ज इज लाइक अ शीट ऑफ चार्ज विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे मैं लिख सकता हूं Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट. So the force experienced by the negative plate will be equal to charge on the negative plate multiplied with the electric field due to the positive plate. So it comes out to be Q square upon 2a epsilon naught. ठीक है ना. So ये याद रखने वाली बात है. और अगर मैं Q को सिग्मा इंटू ए लिख दूं तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2a epsilon naught, which can also be written as sigma square upon 2a epsilon naught. So simple तरीका है. This will also be equal in magnitude to the the force experienced by the positive plate. तो अगर मुझे force on the positive plate देखना होगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव प्लेट से मैं कहूंगा force on the positive plate is equal to charge on the positive plate multiplied with the electric field due to the negative plate. Similar way में निकाल के मैं मैग्नीट्यूड दोनों का सेम कर दूंगा. डायरेक्शन ऑपोजिट होगा इसलिए ये अट्रैक्टिव हो. I hope that makes sense and is clear to each one of us. So with this, I'll be stopping here. I hope we've discussed many derivations and things related to understanding and solving questions on capacitors. Do give me a feedback if you need further help, but I've tried to cover most of the important things here. Maybe if not a derivation, but from a numerical solving perspective. Okay? So with this, I'll stop here. Thank you and all the best. Do this chapter, do the questions. You're going to do a great job. Thank you.